तो हम लोग वही हिस्ट्री का जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे फिर से। ठीक है। तो टॉपिक 10 है तुम्हारा सप्रेशन ऑफ बिहार। ठीक है। अब सप्रेशन ऑफ बिहार को कैसे स्टार्ट करिएगा, कैसे एंड करिएगा, ये इम्पोर्टेंट होता है। मार्क्स नहीं मिलता है, स्टार्टिंग वो पढ़ता है, एंडिंग वो पढ़ता है, और बीच में देखता है कि वो क्वेश्चन का जो डिमांड है उसका टॉपिक सब टॉपिक का हेडिंग दिया है कि नहीं, बस इतना पर ही वो नंबर देता है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, बिहार सेलिब्रेट्स एज द ईपी सेंटर ऑफ इंडियाज एंशिएंट heritage and the land of Renaissance. Home to the First Republic, Vaisali, Buddhas and Guru Nanak saw its suppression movements gain momentum through Mahesh Narayan and Sachidanand Sinha. Influential 1906 booklet. Influential 1906 booklet. Culminating culminating in the creation of Bihar and Orissa as a separate province on March 22, 1912. Bihar celebrates as a epicenter of India's ancient heritage and the land of Renaissance, Renaissance, home to the first republic, Vaisali, Buddha, Guru Nanak, first republic, Vaisali, Buddha, Guru Nanak, saw its suppression movement gain momentum through Mahesh Narayan and Sachidanand Sinha. Influential 1906 booklet. Influential 1906 booklet culminating in the creation of Bihar and Orissa as a separate province on 22 March 1912. इससे रिलेटेड एक सचिदानंद सिन्हा का एक कोट है कि बिहार मस्ट हैव इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी टू इंश्योर प्रॉपर डेवलपमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस. Proper development and self-governance. Bihar must have its own administrative identity to ensure proper development and self-governance. Since conclusion क्या है कि since in its 1912 creation, Bihar has steadily advanced in governance, culture and development. A journey further strengthened under the leaders like Nitish Kumar. Bihar Divas 22 March celebrate Nitish Kumar. Bihar Divas 22 March celebrate this resilience and heritage. Bihar Divas 22 March celebrated this resilience and heritage, reaffirming the state pride and evolving identity. Reaffirming AFFIR reaffirming the state pride and the evolving identity. ठीक है। अब चंपारण में आ जाओ। टॉपिक 11 है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह को इंट्रोड्यूस कैसे करेगा? ठीक है, ये तो फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है, तो ये तो आपको रेडीमेड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन याद ही रहना चाहिए कि the 1917 चंपारण सत्याग्रह marked the first decisive fusion of Gandhian Satya and Ahimsa with political actions emerging as India's earliest civil disobedient movement against the oppressive Tinkatia system. Against the oppressive OPRESSIVE oppressive Tinkatia system. It signaled a transformative shift from elite petitioning to participatory mass resistance, becoming a true
watershed in the freedom struggle, becoming the true watershed in the freedom struggle, becoming true watershed, mm, becoming true watershed, becoming a true watershed in the freedom struggle. कोट एक गांधी जी का एक कोट है कि द चंपारण episodes was the turning point in my life. It taught me that through non-violence, move mountain. One can move mountain. गांधी जी ने इस पर एक कोट बोला था कि द चंपारण एपिसोड वॉज टर्निंग पॉइंट ऑफ इन माई लाइफ. इट टॉट मी दैट थ्रू नॉन वायलेंस वन कैन मूव माउंटेन. ठीक है. द चंपारण एपिसोड वॉज टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ. इट टॉट me that through non-violence one can move a mountain. कंक्लूजन यह है कि as बिपिन चंद्रा observed as Bipin Chandra observed, Champaran transformed Gandhi from a leader of a cause into the leader of nations, making a decisive shift in India's freedom struggle. Its legacy endures through initiatives like the Champaran Satyagraha circuit in Muzaffarpur and East West Champaran, and the award-winning 2025 Champaran Satyagraha film, which continue to honor the popularize this historic movement. ठीक है. ऑनर एंड पॉपुलराइज दिस हिस्टोरिक मूवमेंट. ये जैसे कि एक मूवी अवार्ड विनिंग मूवी आया एंड द अवार्ड विनिंग मूवी 2025 चंपारण सत्याग्रह फिल्म which continue to honor or popularize this historic movement. ठीक है. तो ये फिर नेक्स्ट है तुम्हारा केव आर्किटेक्चर से रिलेटेड टॉपिक 12. इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे कि जब मैंने क्या किया कि अलग अलग रीजन का अलग अलग इंट्रोडक्शन कर दिया है. मोस्ट प्रोबेबली तो ईस्टर्न इंडिया से पूछेगा, लेकिन अगर कोई और रीजन से पूछा तो भी आपके पास रहेगा कंटेंट. ठीक है. ईस्ट इंडिया फ्लरिश्ड with the rise of Buddhism, Jainism and Ajivikas sects between the 4th century BCE to and subsequent centuries. मेडिटेशन ये क्या था? मेडिटेशन स्पेस था, स्टिक रिट्रीट था. जैसे साधु जब मानसून होता था तो वो अपने केव में आ जाते थे, तो ये स्टिक रिट्रीट था. ASCETIC स्टिक. ठीक है. स्टिक का मतलब होता है साधु. ठीक है. स्टिक ASCETIC स्टिक रिट्रीट था एंड प्लेस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस था. ठीक है. रिलीजियस प्रैक्टिस होता था. और डेवलपमेंट रिमार्केबल रॉक कट आर्किटेक्चर. डेवलप रिमार्केबल रॉक कट आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ठीक है. फिर अगर वेस्टर्न इंडिया का पूछेगा तो ऐसे स्टार्ट करेंगे कि तुम्हारा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश is renowned for its Buddhist, Hindu and Jain rock cut cave, reflecting religious, cultural and architectural development from the 2nd century BCE to 10th century CE. फिर उसके बाद साउथ इंडिया में तुम्हारा अगर देखा जाए तो साउथ इंडिया का रिप्रेजेंट्स क्रूशल फेज इन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, ब्लेंडिंग रिलीजियस डिवोशंस विथ artistic excellency. The cave span from the 3rd century BCE to 9th century CE, primarily like to Buddhist, Hindus and Jain traditions. ठीक है. तो साउथ इंडियन का भी हो गया तुम्हारा
ये एक क्रूशल फेज था इन एवोल्यूशन ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, blended with religious devotions with artistic excellency. आर्टिस्टिक एक्सेलेंसी था साउथ इंडियन का केव का डिजाइन वाला था. द केव स्पैन फ्रॉम 3rd century BC to 9th century CE, primarily linked to Buddhist, Hindus and Jain traditions. अब कोट इसमें लिख सकते हैं कि जोसेफ कैम्बेल था जो बोला था कि द केव यू फियर टू एंटर होल्ड्स द ट्रेजर यू सीक. ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द symbolic significance of cave as a space of transformation and enlightenment. Symbolic significance of the cave as a space of transformation and enlightenment. अब इसमें कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं कि तुम्हारा ईस्ट इंडिया केव के लिए कंक्लूजन लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्ट्स अर्ली बुद्धिस्ट जैन एंड आजीविका ट्रेडिशंस अंडर द मौर्यन एंड खारवेला पैट्रोनेज. ठीक है, मौर्यन और खारवेला उड़ीसा का, ठीक है, पैट्रोनेज. साइट्स लाइक बराबर, नागार्जुना एंड उदयगिरी, खांदेगिरी showcase the earliest experiments in rock cut design, making a beginning of Indian cave tradition and its spiritual artistic evolutions. ठीक है, ये एक मतलब कि जो बराबर केव, नागार्जुना केव, उदयगिरी, खांडगिरी केव जो है ये शोकेस द अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट्स इन द रॉक कट डिजाइन. ये सबसे पुराना है, ठीक है, रॉक कट डिजाइन. ठीक है, अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट इन द रॉक कट डिजाइन, making the beginning of India's cave tradition and its spiritual artistic evolution. ठीक है, फिर उसके बाद वेस्टर्न इंडिया में आ जाओ तो फ्रॉम आजीविका टू इलोरा रिप्रेजेंट्स द जेनिथ ऑफ इंडियन रॉक कट आर्ट, blending Buddhist, Hindus and Jain elements, patronized by the Satavahanas and Rashtrakutas. They reveal remarkable architectural refinement and religious harmony, symbolizing Indian artistic golden age. ठीक है, from Ajivika to Ellora represents the zenith of the India's rock cut art, blended Buddhism, Hinduism and Jainism elements, patronized by the Satavahanas और राष्ट्रकूटा के द्वारा ये पैट्रोनेज किया जाता था. और they reveal a remarkable architectural refinement and religious harmony, symbolizing Indian artistic golden age. साउथ इंडिया के लिए अगर रहेगा तो उसके लिए भी कंक्लूजन है कि नोटेबल बदामी एंड महाबलीपुरम, बदामी और महाबलीपुरम का reflects the transitions from rock cut to structural temple under the Pallavas and Chalukyas. ठीक है, under the Pallavas, PLLAVAS, Pallavas and Chalukyas, 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 Chalukyas. They embodies regional creativities, devotions and technical innovations, linking early Aztec cave with the Dravidian temple architecture. ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आ जाओ, टॉपिक नंबर 13. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, तो इसको इंट्रोड्यूस ऐसे कर सकता है कि इनिशियली प्रपोज बाय द लॉर्ड पल्मर स्टोन बट लेटर इंट्रोड्यूस बाय द एडवर्ड हेनरी स्टेलिन. ये एडवर्ड हेनरी स्टेलिन के द्वारा स्टैनली के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया. एडवर्ड हेनरी स्टैनली STANLEY स्टैनली के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया. एंड द एक्ट वाज द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, बिकम अ transformative milestone that ended the company rule and
ट्रांसफॉर्म इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन विद द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। और ये जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, इनेक्टेड ऑन 2 अगस्त 1858 को इसको इनेक्ट किया गया, 2 अगस्त 1858 को। इट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ डायरेक्ट इम्पीरियल गवर्नेंस इन इंडिया। कंक्लूजन में इसको लिख सकते हैं कि ended company rule and established direct British control, but it exclusions of Indians from governance led to the groundwork for the later reforms like Indian Council Act of 1800, Indian Council Act of 1861, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, ये तुम्हारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 हो गया, क्योंकि उसमें तुम्हारा इंडियन को एक्सक्लूजन कर दिया था, जिसके कारण से गवर्नेंस लेड टू द ग्राउंड फॉर द लेटर रिफॉर्म्स लाइक इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। फिर अगर 1861 से अगर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि the Indian Council Act of 1861 shaped by the Sir Bartley Ferry Minute in 1860 and the Queen Proclamation 1858 and enacted under the Sir Charles Wood and Lord Canning, ठीक है। सर चार्ल्स वुड और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको इनेक्ट किया गया। सर चार्ल्स वुड और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको इनेक्ट किया। मार्क द फर्स्ट मॉडेस्ट स्टेप टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशंस इन इंडिया। मार्क द फर्स्ट मॉडेस्ट स्टेप टुवर्ड्स द लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशंस इन इंडिया। दो लिमिटेड इन स्कोप, it laid crucial groundwork for India's gradual evolution towards representative and constitutional governance, ठीक है। दो लिमिटेड था, जो चूँकि लिमिटेड था लेकिन इट इज़ अ क्रूशल ग्राउंडवर्क फॉर द इंडियंस ग्रेजुअल एवोल्यूशन टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। इसका कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं कि द एक्ट मार्क द कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन, ठीक है। द एक्ट मार्क द constitutional milestone introducing limited participation, legislative divisions and administrative specializations, yet remain constrained by earliest elitist representation, yet मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशलाइजेशन में लिमिटेड पार्टिसिपेशन हुआ, लेकिन ये तुम्हारा येट रिमेन कंस्ट्रेंड बाय द एलिटिस्ट ELITIST एलिटिस्ट रिप्रेजेंटेशन, एक्सक्लूसिव डोमिनेंसी DOMINANCE dominancy, exclusive executive dominancy and weak accountabilities. Even so, it laid the groundwork for more representative reforms, including the Indian Council Act of 1892. Even so, it laid the groundwork for the more representative reforms, including the Indian Council Act of 1892. टॉपिक 15 है कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इंट्रोडक्शन है कि इनएक्टेड अंडर द लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा इसको इनएक्ट किया गया, ठीक है। 1892 enacted under the Lord Lansdowne, the Indian Council Act of 1892
responded to the growing political awakening and demand articulated by the Indian National Congress, founded in 1885. It marked transitional steps from the limited reforms of 1861 towards early representative governance with the aim clearly outlined by the Lord Curzon and Under Secretary of State. And Under Secretary of the State. Under Secretary of the State. कोट है कि गोपाल कृष्ण गोखले इंडियाज लीडर इस पर गोपाल कृष्ण गोखले जो बोला था जो कि इंडिया के लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु भी थे कि द 1892 एक्ट इज अ स्टेप फॉरवर्ड for Indian representation, but its powers are too restricted to influence real governance. But its power are too restricted to influence the real governance. ठीक है गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था गोखले GOKHALE गोखले गोखले KHALE गोखले बोला था कि the 1892 Act is a step forward for Indian representations. But the power are too restricted to influence real governance. ठीक है फिर कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि the act marked transition steps in Indian constitution evolutions embedding early democratic elements within an imperial framework. Its limitations intensified demands for genuine self-governance, leading direct to the Morley Minto reforms of 1909. Leading direct to the Morley Minto reforms of 1909. फिर टॉपिक 16 है कि इंडियन काउंसिल एक्ट मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909. ठीक है तो इसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो इंट्रोड्यूस ऐसे कर सकते हैं कि द मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 नेम्ड आफ्टर जॉन मॉडले एंड लॉर्ड मिंटो. John Morley and Lord Minto respond to rising Indian political consciousness consciousness and demand for the Indian National Congress and the Muslim League and demands from the Indian National Congress and Muslim League. They introduced limited concerns aimed to co-opting Indian elites while preserving British imperial control. कोर्ट ये दे सकता है कि बिपिन चंद्र इस पर कोर्ट बोला था कि द एक्ट वाज हाफ हार्टेड reforms designed to co-opt elite while maintaining the British supremacy. The act was half-hearted reforms
designed to co-opt elites while maintaining the British supremacy. Conclusion में ये लिख सकते हैं कि the Indian Council Act of 1909 was transitional reforms introducing elective representation and communal politics, but it failed to provide responsible governance government responsible government, keeping imperial authority intact. The Council Act of 1909 was a transitional reform. ठीक है, transitional reform था ये, introducing elective representation and communal politics. ये elective representation को भी include किया and communal politics को भी include किया, but it failed to provide responsible government. लेकिन ये fail हो गया to provide a responsible government, keeping imperial authority intact. फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, 1919, जिसको मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं. तो इसमें कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 सेप द ब्रिटिश, मतलब कि ये एक सेप्ड द ब्रिटिश कैरेट एंड स्टिक अप्रोच. सेप किया, कैरेट है CARROT, कैरेट एंड स्टिक STIC अप्रोच को सेप किया. was introduced by Montagu and Chelmsford in the wake of World War One. ठीक है. It aimed to address rising Indian political aspirations and implement the Montagu Declarations 1917. It aims to address the rising Indian political aspiration. को कैटर करने के लिए किया गया. It aimed to address rising Indian political aspirations and implement the Montagu Declaration. MONTAGU, Montagu Declaration, DCLART, 1970, promising gradual self-government. कोट है कि सर कोटनी इल्बर्ट, it was like one of those caravan sarais which could be run up rapidly for an Indian princess to meet the temporary needs. ये इस पर कोट सर कोटनी इल्बर्ट बोला कि ये एक लाइक अ कैरावन सराइज है जो कि विच वुड रन अप रैपिडली फॉर एन इंडियन प्रिंस टू मीट टेम्पररी नीड. कंक्लूजन है कि द मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस डायरकी एंड मोडेस्ट इंडियन पार्टिसिपेशंस. इंट्रोड्यूस किया एंड मॉडर्न इंडियन पार्टिसिपेशन को भी इंट्रोड्यूस किया, मेकिंग अ कॉशियस स्टेप टूवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट. कॉशियस स्टेप था ये टूवर्ड्स द सेल्फ गवर्नमेंट. CAUTIOUS, cautious step towards the self government. Yet their limitation disappoint nationalists and set the stage for the more far-reaching Government of India Act 1935. Yet their limitation disappoint nationalists and set the stage for the more far-reaching Government of India Act 1935. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आ जाते हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द लास्ट मेजर ब्रिटिश रिफॉर्म्स वाज बेस्ड ऑन द साइमन कमीशन एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ये इसका बेसिस कहाँ था?
तो साइमन कमीशन और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, ठीक है। बेसिस ऑन द साइमन कमीशन एंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, it aims to provide provincial autonomy, federal structure, and prepare India for responsible government addressing the failure of diarchy under the 1919 Act. इसका एम था कि प्रोवाइड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना, फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, और प्रिपेयर्ड इंडिया फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर किया गया इंडिया को, प्रिपेयर इंडिया फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एड्रेसिंग द फेलियर ऑफ डायरकी अंडर द 1919 एक्ट। जो फेलियर ऑफ डायरकी हो गया था उसको एड्रेस किया गया था यहाँ पर, एड्रेसिंग द फेलियर ऑफ डायरकी अंडर द 1919 एक्ट। इस पर कोट है जवाहरलाल नेहरू का कि we are provided with a car we are provided with a car, all brake, no engine। कंक्लूजन है कि द एक्ट एस्टैब्लिश्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये एक्ट जो है वो एस्टैब्लिश किया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को एस्टैब्लिश किया, ठीक है। ब्रॉडन इंडियन रिप्रेजेंटेशन को ब्रॉडन किया, ठीक है, ब्रॉडन इंडियन रिप्रेजेंटेशन एंड लेड प्रोटो पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क दैट इन्फ्लुएंस लेटर कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशंस। broaden किया इंडियन रिप्रेजेंटेशंस एंड लेड टू द प्रोटो पार्लियामेंट्री framework that influenced later constitutional evolution and led a proto-parliamentary framework that influenced the later constitutional evolutions led a proto-parliamentary framework and influenced later constitutional evolutions. Though its federal scheme failed, it became a crucial architectural base for the Constitution of India. Though its federal scheme failed, जो जो इसका दो परंतु इसका फेडरल स्कीम फेल हो गया, लेकिन इट बिकम अ क्रूशल, दो इट्स फेडरल स्कीम फेल्ड, it became a crucial architectural base for the Constitutions of India. Crucial architectural base, architectural, 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 TECTURL, architectural, TECTURL base for the Constitution of India, ठीक है। फिर आ जाओ वर्किंग क्लास ऑफ नेशनल मूवमेंट। वर्किंग क्लास ऑफ नेशनल मूवमेंट से अगर क्वेश्चन आएगा तो एक बार आया है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे कंक्लूड करेंगे। तो वर्किंग क्लास एंड द नेशनल मूवमेंट से अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया create a significant working class that fueled independence struggles, pushes factors like fragmented village land holdings and flawless revenue policies drove men to the factories with regions such as Saran, Muzaffarpur, Darbhanga, Shahabad and Ratnagiri supply much of the labors. By 1920, this workforce include rural social reject. This workforce include rural social reject, traditional artisan and landless lower caste and uncapable group. कोट है कि बाल गंगाधर तिलक का एक कोट है कि द
progress of India lies in the upliftment of her laboring masses. Laboring masses, the nation's control, the nation cannot rise without them. ठीक है. एक बाल गंगाधर तिलक का कोट है वर्कर के लिए कि the progress of India lies in the upliftment of laboring masses. Upliftment of her laboring masses. Of her laboring masses, no nation cannot rise without them. कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि पोस्ट वार राइवलरी ऑफ 1947 49 49 47 49 splintered labor politics producing four major central federations INTUC, HMS and HMP, UTUC. India's working class movement ultimately grew from intertwined focus of colonial exploitation, industrialization, poor labor conditions, and global ideas, reformist initiatives, and nationalist mobilizations. फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930 टू 1934 तक सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चला. ठीक है. 1930 से लेकर 34 तक सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चला, जिसको इंट्रोड्यूस हम ऐसा कर सकते हैं कि फॉलोइंग द लाहौर सेशंस 1929 पूर्ण स्वराज्य डिक्लेरेशन एंड द रिजेक्शन ऑफ Gandhi 11-point ultimatums, the civil disobedience movement emerged as a second great mass upsurge of the freedom struggle. In Bihar, salt satyagraha, boycott, and widespread popular modern mobilization turned Gandhi's call into a grassroots awakening, echoing Dr. Rajendra Prasad's view that the spirits of Swaraj had reached every village. कोट है कि महात्मा गांधी का कि इन लेटर ऑफ टू राजेंद्र प्रसाद in 1931 that Bihar has given India's men of courage and women and quiet. तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है वो तुम्हारा 1930 से लेकर 34 तक चला. ठीक है. इंट्रोडक्शन क्या हुआ कि फॉलोइंग द लाहौर सेशन ऑफ 1929 पूर्ण स्वराज declarations and rejection of Gandhiji 11-point ultimatums, the civil disobedience movement emerged as a second great mass upsurge of the freedom struggles. In Bihar, salt satyagraha, boycotts, and widespread popular mobilizations turned Gandhi's call into grassroots awakening, echoing Dr. Rajendra Prasad's view that the spirit of Swaraj had reached every village. Echoing Dr. Rajendra Prasad's view that the spirit of Swaraj had reached every village. तो इस पर महात्मा गांधी का एक कोट था कि जिसमें महात्मा गांधी इन द लेटर टू राजेंद्र प्रसाद 1931 Bihar has given Indian men of courage. Bihar has given Indian men of courage and women of quiet strength. Their obedience to truth, disobedience
to tyranny are lessons to the whole nations. Are the lessons to the whole nation. Their obedience to truth, disobedience to tyranny are the lessons to the whole nation. Conclusion में लिख सकते civil disobedience was Indian moral thunder against political slavery. ये सी एफ एंड्रयू ने बोला था, ठीक है, सी एफ एंड्रयू ने बोला था तुम्हारा कि सिविल डिसोबीडियंट है जो वाज इंडियन मॉरल थंडर अगेंस्ट द पॉलिटिकल स्लेवरी, सी एफ एंड्रयू ने बोला था, ठीक है, एंड्रयू ने बोला था, सी एफ एंड्रयू ने बोला था, ए एन डी आर ई डब्ल्यू एस एंड्रयू, सी एफ एंड्रयू ने बोला था कि सिविल डिसोबीडियंट वाज इंडियाज मॉरल थंडर अगेंस्ट पॉलिटिकल स्लेवरी, स्लेवरी। फिर इंडियन सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में है कि इंट्रोडक्शन है कि प्रोवोक्ड बाय लॉर्ड लिनलिथ को यूनिलैटरली डिसीजन टू ड्रैग इंडिया इनटू द वर्ल्ड वार टू एंड in the limited concessions of the August of 1940, unlimited concession, CESSIONS concession of August of 1940. Gandhiji launched an individual satyagraha as a symbolic assertions of consciousness. It embodied a moral, non-violent protest rooted in truth and freedom of expansion rather than direct political confrontation, 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 ठीक है। कोट है कि एक महात्मा गांधी का कोट है कि द इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज meant to seek power but to assert the right of free speech, not meant to seek power. The individual satyagraha was not meant to seek power. जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है ये पावर के लिए नहीं किया गया, नॉट मेंट फॉर सीक पावर बट टू असर्ट द राइट ऑफ फ्री स्पीच, बट ये असर्ट करता है राइट ऑफ फ्री स्पीच। एक लूसी फिंचर का भी एक कोट है कि गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज अ विस्पर बिफोर द स्टॉर्म ऑफ 1942, वाज अ विस्पर बिफोर द स्टॉर्म ऑफ 1942। गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज अ विस्पर before the storm of 1942, before the storm of 1942। लुइस फीचर ने बोला था, CHER फीचर ने बोला था। कंक्लूजन है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह 1942-41 इन बिहार लेड बाय लीडर्स लाइक बाबू श्री कृष्ण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, बाबू Sri Krishna Sinha, Anugrah Narayan Sinha, and women activist asserted freedom of speech, inspired mass political awareness, and trained volunteers at Sonpur, making Bihar as a key center for disciplined non-violent resistance that prepared the ground for the Quit India movement. That prepared the ground for the Quit India movement. That prepared the ground of the Quit India movement. Individual सत्याग्रह 1940 से 41 तक चला इन बिहार led by the leaders like Babu Sri Krishna Sinha, Anugrah Narayan Sinha, women activist
asserts freedom of speech, inspire mass political awareness, and trained volunteers at Sonpur, making Bihar a key center for discipline, non-violence resistance that prepared the ground for the Quit India movement. That prepared the ground for the Quit India movement. फिर आ जाओ क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं द क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 ground in the Wardha resolutions became a people-led uprising in which the Azad Dasta Jayaprakash Narayan and Siaram Dal turned Bihar into the major resistance hub major resistance hub amid FIRC fierce repressions. It embodied India's unwavering resolve for freedom and delivered a decision blow to the British legitimacy blow of British legitimacy। कोट है महात्मा गांधी का कि we shall either free India or die in the attempt. We shall not live to see per- per- perpetuations of our slavery. We should not live to see perpetuation of our slavery. We should not live to see perpetuation of our slavery. We should not live to see perpetuation of our slavery. We should not live to see perpetuation of our slavery. We should not live to see the perpetuation of our slavery. We should not live to see perpetuation of our slavery. We should not live to see perpetuation of our slavery. We should not live to see perpetuation of our slavery. We should not live to see perpetuation of our slavery. We should not live to see the perpetuation of our slavery. We should not live to see perpetuation of our slavery. We should not live to see perpetuation of our slavery. We should not live to see perpetuation of our slavery. We should not live to see perpetuation of our slavery. We should not live to see perpetuation of our slavery. We should not live to see perpetuation of our slavery. We should not live to see perpetuation of our slavery. We should not live to see perpetuation of our slavery। ठीक है। फिर conclusion है कि the leaderless and spontaneous character of Quit India movement transformed the freedom struggle into the unstoppable march towards independence, echoing Gandhi's call for democracy, where everyone is his own master. It united India's beyond communal line in the shared national purpose. Truly, Quit India was the final trumpets of freedom. Truly, Quit India was the final trumpet of trumpet. Truly, Quit India was the final trumpet of freedom. The soul of the nations rising against its chain. The soul of the nation rising against the chains. The soul of the nation rising against the chain. The leaderless and spontaneous character of Quit India movement transformed the freedom struggle into the unstoppable
march towards independence, echoing Gandhi's call for the democracy where everyone is his own master. It united India's before communal lines in the shared national purpose. Truly, Quit India was the final trumpet of freedoms, the soul of the nations rising against its chain. फिर जयप्रकाश नारायण पर एक टॉपिक है कि जयप्रकाश नारायण रिवर्ड revered as Loknayak. Jayaprakash Narayan, also known as Loknayak, was a pioneer, pioneering socialist and mass mobilizations leaders from Quit India to call for total revolutions, who who championed democracy and people power. Who championed the democracy and the people power. His life embodied ethical politics and steadfast resistance to authoritarianisms, making him a lasting moral force in the modern India. Making him a lasting moral force in a modern India. कोट है क्या कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक कोट है कि जयप्रकाश नारायण was one of the India most fearless voice of conscience and true tearless champions and tearless champion of democracy and social justice. Jayaprakash Narayan was one of the India most fearless voice of conscience, conscience, voice of conscience, conscience, and a tearless champion of democracy and social justice. कंक्लूजन है क्या कि कंक्लूजन है कि conclusion है कि combining ethical socialism with participatory economics emphasize non-violence, decentralization and equitable development continue to influence policies like Panchayati Raj, PM Kisan, NRLM and Atmanirbhar Bharat. PM Kisan, Atmanirbhar Bharat, Panchayati Raj, PM Kisan and Atmanirbhar Bharat. Atma ATM, Atma Nirbhar, NIRBHAR, Atmanirbhar ATMA and Atmanirbhar. Atmanirbhar ATMANIRBHAR Nirbhar Bharat BHART Bharat Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar ATMA and Nirbhar 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 Bharat BHART Atmanirbhar Bharat. ठीक है, भारत फिर है कि राम मनोहर लोहिया के बारे में. ठीक है, ये कल पढ़ेंगे. ठीक है, इतना तक ही रहने दो टॉपिक. ठीक है.